हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस शेयर के बारे में, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। दैट इज हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है वो डील करती है सिर्फ कॉपर प्रोडक्शन, माइनिंग एंड देयर प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग इन ऑल दिस प्रोसेस। सो ये शेयर पिछले 1 साल में काफ़ी हाई रिटर्न दे चुका है। ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा की रैली देख चुका है। तो आज हम जानेंगे इसके फंडामेंटल रीजंस के बारे में कि क्यों ये शेयर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या इसके पीछे रीजंस है। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे कि मार्केट कैप इसकी जो है 50,140 करोड़ रुपए की है। सिंस ये एक पीएसयू जो है कंपनी है जो कि गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग बैकिंग है एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स आर देयर। इंडियाज ओनली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर, दिस इज द ओनली कंपनी in India which is actually producing copper. So that is why there is a monopoly within the company also. So they have a very good positive stability and a long term relevance. That is the first major point for the Hindustan Copper कि काफी अच्छी कंपनी है। सेकंड, हम इसके वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्चुअली इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो काफ़ी हाई है इस टाइम पे, दैट इज 88.33%, जो कि इंडस्ट्री वाइज जो स्टैंडर्ड अगर हम देखें वो विद सिमिलर इंडस्ट्रीज पैटर्न, सो दैट शुड बी अराउंड 16 पॉइंट और 17 अप्रॉक्स। सो इट इज अप्रॉक्सिमेटली 5 times हायर देन द प्राइस वैल्यूएशन कंपैरिजन, व्हिच actually say that the price of this stock is very high, is in the market. If you could say the price currently showing for sale and purchase is over and above 500 rupees, and that should be approximately around 160 at the time अगर हम उसकी फंडामेंटल्स की कंपैरिजन की बात करें तो। इसका मतलब क्या है? स्टॉक इज प्राइसिंग में वेरी हाई फ्यूचर ग्रोथ एंड करंट प्राइस सो फार इज अहेड ऑफ अ प्रेजेंट अर्निंग। मतलब उनकी अर्निंग्स इस टाइम पर उतनी उस हिसाब से नहीं है जो कि जस्टिफाई करती हैं उसके प्राइस को, ट्रेडिंग प्राइस को, बट ये काफी फ्यूचरिस्टिक प्राइस है बेस्ड ऑन दी what are the new things are going to be covered by the company, or like what are the new projects are there. So that is very very important, and any slowdown in copper prices or execution can hurt the stock very badly. So this is we need to understand. हम इससे बात करें कि इसकी प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, तो प्राइस टू बुक रेशियो इज अराउंड 16.82, which is again seems a very higher side. That is because if you see the comparison of various companies and similar industries pattern अगर देखें तो प्राइस जो होता है जिस पे शेयर सेल या परचेज किया जा रहा है, that should be approximately like 3 to 5 times of the actual book value price. The market price of the share should be approximately 3 to 5 times maximum of the book value price. So current book value price is around 30 rupees, and जो उसका मार्केट प्राइस है वो 50 से भी ज़्यादा है, तो दैट इज अराउंड 16 times शोइंग। सो ये काफ़ी हाई प्राइस है एज ऑफ नाउ, जिसका ये रीजन स्टेट में है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली जो देखी जा रही है, और मार्केट ऑप्टिमिस्टिक इज एट पीक लेवल। इसके बारे में आप जानते हैं, अगर जितनी भी ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट करोगे मार्केट में और उसकी सप्लाई जो है काफ़ी कॉन्स्टेंट है, तो प्राइस तो हमेशा ही ऊपर जाना ही है। तो दैट इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ अर्निंग ग्रोस शार्पली इन कमिंग ईयर्स। But Abhi, as of now, if you say from my standpoint, this is quite higher. The price to book value ratio is quite higher. But let's see significantly what going to be happen, futuristic approach and how this going to be react. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 19.05% है। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। Return on equity is close to 20% is a very strong sign, especially for the PSU company. Generally, PSU's company इतने अच्छे returns नहीं देते हैं जो कि ये company दे रही है, तो that is very a good and positive sign. Improve operational efficiencies है, better utilization of capital है. This is very a big positive fundamental from my side. एंड अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.05%. So that is almost a debt-free company. You can say the entire company is a debt-free. There is no substantial subsequent loan portion or a debt portion within the company. So there is very low financial risk within the company, or like for the shareholders as well.
can fund the expansion without stress. So there is no need of a worry about the company. If company is going to get more and more productions and orders, then there will be a huge growth for the company. So that is very excellent point for the balance sheet as well as the fundamental financial statements. अब हम बात करते हैं इसके अर्निंग की, तो इसका अर्निंग प्राइस पर शेयर है 5.87, which is also quite very decent, but not justifying the price earning ratio of 88 on it. I mean, the price earning ratio is actually not justifying this price earning ratio, that current EPS which is going. शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स जो है उसमें पास 66.14% शेयर है, जो कि प्रमोटर ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी because it's a PSU company. So very heavy or substantial portion of the share capital is held by the company. And second, the retail, the investors, basically the individual, like we hold, and we are currently individuals are holding 22.79% within the company, and there are domestic institutional investors which holding 5.51% of the stake in the company. So it's quite a decent allocation of the shareholding of the company. And अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में. रेवेन्यूज जो है अगर आप देखेंगे फ्रॉम लास्ट ईयर कंपैरिजन टू सितंबर 2024 टू सितंबर 2025, there has been increase of approximately 200 crores, and that is very huge as of now if you say. सो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए और इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग रैली को देखते हुए, तो माय फाइनल ओवरव्यू विल बी बेस्ड ऑन दिस, लाइक overall fundamental review for Hindustan Copper is quite positive from my side. Monopoly है कंपनी की, like position in the India. Currently, this is a government company and only in the company who is actually dealing in the copper productions, mining, refining, and all those things. So, as you know, the AI data-driven centers, and like there is a EV cars are there. So demand in EV cars for copper is extremely 3 to 5 times higher than the normal vehicles. So in EV vehicles, there is a substantially increase of the demand. That is why the copper demand is so increasing. And the other hand, there is a renewable energies are there. So there are so many things which we can say about this. So that is why the demand seems very higher at this point of a time. So almost the zero debt company है, beneficial for EV renewable energy. Negative point मेरा काफी यही है, बस extremely expensive valuation है. Stock already ran काफी sharply है, already इसमें rally काफी हो चुकी है इस time पे. So highly dependable on global copper prices, how this is going to be and how this is going to be substantially so. So my final verdict is Hindustan Copper is fundamentally improved company, but valuation is stretched. So investment view, no fresh buy at a current price level because the price is already been seems at a very higher side, and the price earning ratio doesn't match with the actual valuation of the company based on the book's value and the market trading price. So if you are already holding these shares, then you can stay invested for a longer period of time, at least for like 3 to 5 years, to see like how this going to, because it is going to give you so much return in the next couple of years because of the future of this copper industry. हाई रिस्क फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके बारे में, तो आई वुड डेफिनेटली will not encourage you to buy those shares of Hindustan Copper at current price, because the prices are actually very high at this point over time and doesn't justify the fundamental values of the company, and the balance sheet and like the income statement of the company doesn't justify it. It's quite overvalued and high price. But if you want to start an SIP in the this share, you can probably think of starting an SIP, because आने वाला future is all about the copper. So everybody is talking about why the copper is going to be the next gold. So this is the reason why, because of the huge demand and the constraint of supply is one of the key factors for the driving the prices are so higher. So if you're thinking of increasing want to buy this, definitely go, but go with the SIP. Don't do a short-term trading or try to get profit out of this, because it will not going to give you the return in a shorter period of time. And
डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट दिस शेयर एंड let me know in my comments also like if you want me to talk about anything or any other shares which I can give a review of that. Definitely know, let me know on this. And once again, this is Indrajit Chaudhary. I'm a chartered accountant and I have created this channel for the review of various stocks, mutual funds, share markets, and like various financial information which I can share with you. I'll be very grateful. And thank you so much. Once again, take care. Bye bye.